2n minus 1 lambda by 4, 2n minus 1 lambda by 2, 10 lambda, 2n plus 1 into lambda by 2. क्या होना चाहिए बेटा? Anyone can give me the answer in the chat box. Ansari गलत, इब्राहिम गलत, तहसीन करेक्ट, इब्राहिम रॉन्ग. अरे बेटा 2n minus 1 lambda by 2 किसके लिए होता है? डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है. कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? ब्राइट पॉइंट है ना. मेरे माँ बाबा तुम लोग ना वाट लगाते एग्जामिनेशन हॉल में. कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा ना. छोटा क्वेश्चन नहीं कर सक रहे. चलो, two monochromatic light waves of intensity I and 4I interfering at a point have a phase difference of 60 degrees. तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? कोई बताएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? टू मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी कितना है? I है और एक 4I है. इंटरफियरिंग एट ए पॉइंट हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ कितना? 60 degrees. So the intensity at that point will be equal to how much? So I'm writing the formula right now for that one. Resultant intensity का formula क्या होता है बेटा? I resultant is equals to your, this is your I1 plus of your I2 plus 2 times of your root I1 I2 into your cos of your phi. ठीक है ना? I1 की वैल्यू कितनी है बेटा? I1 की वैल्यू है 4I प्लस दिस वन की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है? I है, सॉरी, I1 की वैल्यू है I, यानी दिस वन इज योर I plus of your 4I plus of your 2 under root of your I into your 4I into your cos of your 60 degrees. cos 60 कितना होता है बेटा? 4I plus I कितना होगा? ये 5I plus this one is 2. This is under root of your 4 into your I. This will become for me how much बेटा? 4I square into 1 by 2. यानी ये बन गया मेरे पास 5I plus 2 root of your 4 is nothing but of your 2 into your I into your 1 by 2. 1 by 2 1 by 2 चले गया. So 5I plus 2I, that will be equal to 7I. Very good, 7I, third option. चलो next one. Two waves of amplitude A0 interfere and the resultant amplitude from their superposition is A0. Phase difference between the waves is equals to how much? चलो बताइए जल्दी से कोई. Two waves each of amplitude कितना है? A0 interfere and the resultant amplitude from their superposition is also A0. The phase difference कितना? डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना हो बेटा? अंडर रूट ऑफ योर, ये होता है बेसिकली योर A0 स्क्वायर प्लस ऑफ योर A0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर A0 into your A0 into your cos theta. R की भी वैल्यू कितनी है बेटा? A0 है. R की वैल्यू A0 के बराबर है. So I can write this one as of your A0 square is equals to your A0 square plus A0 square plus 2 times of your A0 square into your cos theta. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? This is your 2 A0 square plus of your 2 A0 square into your cos theta A0 square. 2A square इधर से ले लो. This will become for me minus of your A0 square is equals to 2 A0 square into your cos theta. A0 square will get cancelled. तो cos theta की वैल्यू कितनी है बेटा? -1/2. For what value it will be 1/2 बेटा? Cos 120. 120 is -1/2. 120 मतलब कितना रेडियंस बेटा? 120 degrees is equals to 2 pi by 3 radians. So third option will be the answer. ठीक है, चलो, very good. The maximum intensity in Young's double slit experiment is I0. Distance between the slits is given as phi lambda, where lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment. The intensity of light in front of the one of the slit on the screen at a distance of your 10D will be equal to your how much? कोई बता सकता है? Question number 9. यहाँ कर दे रहा हूँ.
चलिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी आई मैक्स की वैल्यू दे रखा है। आई मैक्स की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? आई नॉट। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स यानी स्मॉल डी दे रखा है 5 लैम्बडा। Lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment. The intensity of light in front of one of the slit. Intensity at one of the slit where capital D दे रखा है. Capital D is equals to your 10D. तो intensity की वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, कोई करेगा? Anyone? करके बताइए बेटा। Anyone can give me the answer? 1 Zoha. I naught by 2. Very good. आया सभी को? How many of you are giving me the answer? Option A, I naught by 2. Very good beta. I naught by 2 is the answer. आया सभी को? कोई डाउट है किसी को? करना है कि नहीं है? आ गया सभी को? फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। देखो वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में जब अपन ये वाईडीएस ही लेते हैं ना ऐसा कुछ और यहाँ पर स्लिट होता है तो यहाँ पर कहीं पर उसने बोला कि ये पॉइंट पे अपने को इंटरफियरेंस हो रहा है जहाँ पर मिल रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है बेटा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ तक दे रखी है प्रॉब्लम में, डी इज इक्वल्स टू योर 5 लैम्बडा। ठीक है ना? सो दिस इज सम डिस्टेंस। क्या बोला वहां पर? Distance maximum intensity in experiment, the wavelength of monochromatic light used in the experiment, the intensity of the light in front of one of the slit. Okay, one of the slit मतलब ऐसा होना चाहिए, one of the slit मतलब exactly इसके opposite पे, isn't it? यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा स्लिट की? यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू बन जाएगी d/2, half of that one, isn't it? यानी स्मॉल डी की वैल्यू कितना लिया? 5 लैम्बडा। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखा है 10 into d, यानी दिस विल बी इक्वल टू 10 into d वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 लैम्बडा, यानी ये हो गया 50 टाइम्स ऑफ योर लैम्बडा की वैल्यू। तो अब यहाँ पर अपन को मैक्सिमा के लिए अगर लिख रहे हैं तो y by your capital D is equals to your delta x divided by your small d, होता है ना बेटा? सो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर प्रॉब्लम में? d/2 divided by capital D is equals to delta x divided by your d। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ रही? डेल्टा x is equals to your d square divided by your 2d, and that will be equal to your, just substitute the values। d square की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 लैम्बडा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into कैपिटल D, कैपिटल D की वैल्यू 50 into लैम्बडा, यानी दिस वन इज 5 लैम्बडा into your 5 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 into your 50 लैम्बडा। ये लैम्बडा चले गया, 5 1s 5 10s 5 1s 5 2s, isn't it? That will be equal to lambda by 4. So this is your lambda by 4, यानी डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? लैम्बडा by 4। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए बेटा, कोई बताइए कितना आ जाएगा? डेल्टा x is equals to डेल्टा phi is equals to 2 pi by lambda into your delta x, यानी that will be equal to your 2 pi by lambda into delta x is lambda by 4, ये वाला चले गया, 2 1s 2 2s, यानी that will be equal to pi by 2। So maximum intensity के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, I is equals to your, this will be equal to your I naught into your cos square pi by 2, याद है, isn't it? So that will be equal to your I naught into your cos square, pi की वैल्यू कितनी है बेटा? pi by 2, यानी pi by 4, pi by 4 मतलब 45, so cos square 45, so this one will be equal to your I naught into
1 by root 2 का whole square. That means this will be your I naught divided by 2. I naught divided by 2. आ गई बेटा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Two identical narrow slits S1 and S2 are illuminated by light of wavelength lambda from a point source P. यहाँ से देखो बेटा, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1 है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ L2 है. S1 S2 are two slits. यहाँ पर का डिस्टेंस है मेरे पास सम D. यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L3 है, यहाँ से यहाँ तक L4 है, point Q. As shown in the diagram, the light passing through S1 and S2 is then allowed to fall on a screen. If n is a positive integer, then the condition for destructive interference, इसके लिए destructive interference at your Q will be equal to your how much? These are the options given for us. Try करिए. Two identical narrow slits S1 and S2 are illuminated by light of wavelength lambda from a point source P as shown in the diagram. The light passing through S1 and S2 is then allowed to fall on the screen and n is the positive integer. Then the condition for your destructive interference will be equal to your how much? कोई करेगा? Destructive interference के लिए wavelength कैसा होना चाहिए बेटा? लैम्ब्डा बाई 2 में होना चाहिए. तो ये लैम्ब्डा बाई 2 है, ये लैम्ब्डा बाई 2, ये लैम्ब्डा बाई 2 है. तो ऑब्वियसली n लैम्ब्डा तो नहीं है, तो ये तो होने का चांस ही नहीं हो. तो आंसर शुड बी इक्वल टू n1, 2 और 3 में. अगर मैं पाथ डिफरेंस लिख रहा हूँ बेटा, पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे बेटा? ये L1 प्लस L3, दिस वन इज योर L1 प्लस ऑफ योर L3 माइनस L2 plus of your L4 must be equal to your 2n plus 1 into your lambda by 2. होता है ना बेटा? पाथ डिफरेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना? L2 plus L4 भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो दिस इज ओनली द ऑप्शंस व्हिच आई कैन मैच. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर. क्लियर है? So 2n minus 1 आता ना, हाँ 2n minus 1 आता है या 2n plus 1 आता. मैंने बोला ना, that should be n is a positive integer ना बेटा. If n is a positive integer, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, चलो. In Young's double slit experiment, the two light sources are being green and red, isn't it? So in Young's double slit experiment, the two light sources are green and red laser monochromatic source. In this case, there will be no interference pattern, red and green mixed, white screen, black screen. See, the sources are coherent ना बेटा, coherent sources है लेकिन different wavelength है. So result is there is no interference हो जाएगा इसके अंदर. So there is no interference pattern at all. क्योंकि Young's double slit experiment में two light sources are what? एक तो green है और एक तो red है, isn't it? तो अपने को YDSC में क्या होना चाहिए? Monochromatic course होना चाहिए. Sources are not coherent यहाँ पर. They are having different wavelengths. So there will be no interference at all, isn't it? So I can write here. Sources are not coherent. Condition है ना बेटा, coherent sources के लिए YDSC होता है. और डिफरेंट वेवलेंथ्स भी है, डिफरेंट वेवलेंथ्स भी है. सो नो इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस होने का चांस ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है ना? चलिए. A partially polarized light after suitable refraction through a glass slab is analyzed through a rotating Polaroid. Hence, intensity of light after passing through the Polaroid is independent of rotation. There is a complete darkness always behind the Polaroid. There is a complete darkness only along the particular orientation of Polaroid. Intensity of light behind the Polaroid is minimum but not zero for the two orientations of the Polaroids. बताइए कोई आंसर बता सकता है इसका? Partially polarized light after suitable refraction through a glass slab is analyzed through a rotating Polaroid. देखो बेटा, रिफ्रैक्शन में जब हो रहा था, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जब ये रे ऑफ लाइट ऐसा पड़ेगी तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा रिफ्रैक्ट होगी. यहाँ पर पूरा अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे क्या रहेगा? डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस. यहाँ पर क्या रहेगा? थोड़ा डॉट रहेगा, थोड़ा ऐसा रहेगा,
फिर यहाँ पर डॉट रहेगा सर, यानी पार्शियली पोलराइज्ड है, यहाँ पूरा नहीं हो रहा है बेसिकली. So partially polarized is a mixture of what beta? Unpolarized light and as well as of your polarized light. ठीक है ना? So the best option for this one is intensity of light behind the polaroid is minimum but not zero for the two orientations of the polaroid. So fourth option will be the answer. चलो. 13th वाला lenses का है, 14th वाला भी lenses का है, 15th वाला भी lenses का है, 16 is also the lenses. Light is reflected, partially refracted. ये भी Snell's law है. Percent air bubble, compound microscope, mirror, refractive index, ये भी हो गया. Rayleigh experiment, plano concave, YDSC. चलो 25 का देख लीजिए. In YDSC, distance between the slits is 3.73 lambda, where lambda is the wavelength of light. The number of maxima which can be obtained in the upper portion of the screen, excluding the central maxima. Good question. Can anyone try it, beta? मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई बताएगा? मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है? d into your sin theta will be equal to n into lambda. तो sin theta की वैल्यू will be equal to how much बेटा? n into lambda divided by small d. d की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 3.7 times of lambda. यानी I can write here sin theta value will be equal to n into lambda divided by 3.73 times of lambda. lambda lambda चले गया, ठीक है. यानी sin theta की जो वैल्यू है ना, that will be lesser than or equal to your 1. यानी I can write here n by 3.73 will be lesser than or equal to 1. यानी n value will be equal to your lesser than or equal to your 3.73. यानी n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अपन कितने ले सकते हैं? 3. So that will be equal to your. ठीक है ना? चलो वेरी गुड. 26 with the try करिए. Two coherent sources with intensity I0 and 4I0 respectively interfere in a medium. The maximum intensity of resultant wave is n times the minimum intensity of resultant wave. The value of n square will be equal to how much? मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया, सो क्वेश्चन है I max divided by I minima. I max divided by I minimum. I max का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रूट ऑफ योर I1 प्लस रूट ऑफ योर I2 का होल स्क्वायर divided by root of your I1 minus root of your I2 का whole square, isn't it? So that will be equal to your first one is root of your I0 plus root of your 4 times of your I0 का पूरा whole square divided by this one is root of your I0 minus root of your 4 I0 का whole square. So that will be equal to your how much beta? 2 plus 3. 3 square is nothing but 9. 9 by 1. So I max by I minima. The maximum intensity of resultant wave is n times the minimum. यानी I max is n times of your minimum. यानी n की वैल्यू हो गई 9. तो n square की वैल्यू will be equal to 9 square. 9 square मतलब कितना? 81. So third option will be the answer. ठीक है? n square की वैल्यू पूछा, n की वैल्यू नहीं पूछा. मैं मालूम है मैक्सिमम बच्चों वही रिजल्ट कम करके आते हो. In YDSC, the spacing between the slits is 0.03. Spacing between the slits and small d. ये हो गया small d. And wavelength of light used is lambda. If the angular width of the fringe formed at the distance of the screen is 1 degree, then the value of your lambda will be equal to your how much? Angular fringe width कैसे लिखते हैं बेटा? कोई मालूम है किसी को? 27. यहाँ लिख रहा हूँ देखो. Angular fringe width मतलब कितना बेटा? ये YDSC experiment था, ये slit था, सेंट्रल मैक्सिमम, isn't it? तो यहाँ पर से हम लोग ले रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर कुछ कंडीशन ले लें तो ये वाला जो रिलेशन होता है ना बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन होता है ना दैट विल बी इक्वल टू योर थीटा. ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से एक वैल्यू आप बता लेंगे, दिस वन इज योर वाई, यहाँ से यहाँ तक डालेंगे दिस वन. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाए. ठीक है ना? तो एंगुलर विड्थ कितना है? 2 थीटा. सो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? y by d. Isn't it? So 2 theta value will be equal to 2y divided by capital D. तो खाली एंगुलर विड्थ अगर पूछ रहा है तो टोटल थीटा भी ले सकते हैं,
तो टोटल भी एक थीटा 1 के भी लेग चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना है बेटा, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है ना। सो थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, y डिवाइडेड बाय कैपिटल डी लिख सकता हूं, y की वैल्यू मैक्सिमा के लिए कितना होता है बेटा, सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू d इंटू साइन थीटा, मैक्सिमा के लिए n इंटू लैम्डा d इंटू दिस इज y बाय कैपिटल D, and y by capital D will be equal to how much beta, y by capital D will be equal to your n into lambda divided by small d, ठीक है ना। n की वैल्यू अगर 1 ले रहा हूं तो theta is equals to lambda by d, lambda by d is also written as of your beta divided by capital D, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बीटा बाय कैपिटल डी लिखो या लैम्डा बाय डी लिखो, वन एंड द सेम। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी, तो लैम्डा वैल्यू विल बी इक्वल टू योर पाई डिवाइडेड बाय योर 180 इनटू योर, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.03 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -3, इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द वेवलेंथ। आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू। 27 is over. 28. Choose the incorrect statement for the good telescope where symbols have their usual meanings. ये मैंने बॉयज के लिए पढ़ाया था, गर्ल्स के लिए नहीं पढ़ाया था, तो आप लोग एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए बेटा। For telescope, resolving power is always inversely proportional to resolving power is inversely proportional to wavelength. So wavelength of your red is greater than wavelength of your blue. So I can say that resolving power of your red will be lesser than resolving power of your blue. So for good telescope, it should have the high magnifying power. So resolving power is larger when red light is used instead of your blue light. ठीक है ना? Good question. Next one. The slit width of a single slit diffraction, such as a single slit diffraction, मतलब diffraction का concept. N maximum of double slit pattern are been obtained with the central maximum of the diffraction pattern. D is the distance between the slits, capital D, are used. तो देखो एक बार क्वेश्चन क्या बोला, the slit width of the single slit diffraction such that n maximum of double slit pattern are obtained. यानी सिंगल स्लिट के विड्थ जो है के अंदर n maximum of double slit interference pattern are obtained within the central maximum of the diffraction pattern. D is distance between the slits for YDSC arrangement and screen capital D, and the light used are same for both the arrangement. तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली n lambda into your capital D divided by your small d will be equal to your 2 lambda into capital D divided by your a, तो इसमें से मैं n by d लिख सकता हूँ क्योंकि lambda by d lambda d gets cancel, that is equals to your 2 divided by your a, यानी इसमें से a की वैल्यू बन जाएगी a is equals to your 2d divided by your a, a की वैल्यू हो गई 2d divided by your a, क्लियर बेटा। चलो 30. The polarizer and analyzer are inclined at an angle of 45 degrees. The intensity of the polarized light emerging from the analyzer is 2I0. The intensity of unpolarized light in the incident on the polarizer would be equal to how much? Direct question है बेटा ये, तो ये हो गया intensity of resultant will be equal to your I0 divided by 2 into your cos square theta, क्योंकि फर्स्ट वाले में से निकलने से की वैल्यू कितनी है बेटा I0 by 2, तो I resultant कितना है 2I0 है, so this is your 2 times of your I0 is equals to your I incident कितनी होती है, मान के चलो I0 dash, so this will be your I0 dash divided by your 2 into theta की वैल्यू कितनी है 45 degrees, cos 45 is 1 by root 2 whole square, ठीक है। See polarizer and analyzer are being inclined, ये और D में, see ये में जो है ना ये सिंगल स्लिट में ये डिस्टेंस है बेटा, और डबल YDSC में this is the distance between the two slits. Small d is the distance between the source S1 and S2, and small a is the distance for the single slit, ठीक है ना। तो 2I0 ये I0 इंसिडेंट है बेटा डिवाइडेड बाय 1 by root 2, तो I0 डैश की वैल्यू निकालो इसमें से, I0 डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8 टाइम्स ऑफ I0, क्योंकि ये 2 हो जाएगा 4 2 is 8, so I0 dash is equal to 8 times of your I0, क्लियर है।
चलिए, द एंगल ऑफ पोलराइजिंग फॉर ए मीडियम इज 53 degrees. द क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है यहाँ पर। एंगल ऑफ पोलराइजिंग इज गिवन फॉर मी, यानी आईपी दे रखा है बेटा। ही हैज गिवन फॉर मी व्हाट, आईपी। पोलराइजिंग एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, 53 degrees. क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है वहां पर, यानी tan ऑफ योर आईपी, प्रीवियस टेस्ट लॉ लगा रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू योर म्यू, यानी tan of your 53 degrees is equals to your mu, isn't it? So tan 53 is how much बेटा? म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दिया ना, तो tan 53 की वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू is equals to 4/3, that is equals to mu. So critical angle मतलब sin of your C is equals to 1 by mu. So C will be equal to sin inverse of 1 by mu. म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4/3, यानी दैट विल बी इक्वल टू योर साइन इनवर्स ऑफ योर 3/4. सो साइन इनवर्स ऑफ योर 3/4, सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. 32 लेंसेज का है, 33 प्रिज्म है, 34 अपरेंट डेप्थ है, एंड 35 इज अपरेंट डिस्टेंस लेंसेज का है, 36 लेंसेज का है, 37 कंपाउंड माइक्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है, 38 इज आल्सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 39 इज प्रिज्म. ये वाला देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द व्हाइट लाइट फॉर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन. द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आज क्लास में कराया था, एक बार आप देख लीजिए. उसी तरह से 41, in Young's double slit experiment, a thin transparent film of refractive index 1.5 is introduced in front of one of the slit so that the entire fringe pattern shifts by 1 fringe width. If lambda is the wavelength of light used, then the thickness of the film will be equal to your how much? I hope you can do this question better. कोई करेगा? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? शिफ्ट इज इक्वल्स टू योर बीटा इंटू योर म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस टी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, isn't it? In Young's double slit experiment, a thin transparent film of refractive index 1.5 is introduced in front of one of the slit so that the entire fringe pattern shifts by 1 fringe width. Yani beta value is equals to 1 he is given for me. So it is also beta into mu minus 1 into thickness divided by lambda. This beta will get cancelled. So thickness will be equal to your lambda is equals to mu minus 1 into your thickness t. So mu value is given for me how much beta? 1.5. So it is 1.5 minus 1 into your t. That is nothing but t by 2 is your lambda. That means t is equals to how much for me beta? Lambda by 2 times of lambda. So t is equals to your 2 lambda. Second option. Done? Chalo. Today only I told you this concept. Two coherent sources, two coherent light sources A and B, A and B, with the separation between them as 2D is being placed on x-axis. देखो बेटा, अगर YDSC के अंदर ये स्क्रीन है और ये इसका एक्सेस है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपने को एक्स एक्सिस पे होते हैं तो इसका इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर मिनिमा कुछ बनेगा और इसका जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा. तो इसके लिए अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूँ, अगर दोनों के बीच में डी है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा? डी कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है ना? तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू योर डी इंटू योर कॉस थीटा. ये d कितना है प्रॉब्लम है? d plus d 2d. So this will be your 2d into your cos theta, isn't it? So two coherent light sources A and B are separated by 2d separation. The light emits from the wavelength. Condition for maxima on the circle बोल रहा है. So for the maxima on the circle condition क्या होना चाहिए बेटा? n lambda. So this is your n lambda. So n lambda must be equal to 2d into your cos theta. First option will be the answer. Very good. चलिए next one. Two point sources separated by 2 meters are radiating in a phase with lambda is equals to 0.50 meters. A detector moves in a circle of a larger radius around the source with a center at the center of the two sources in a plane containing them. How many maximas are detected? Same condition right now बेटा. Maxima के लिए condition क्या होनी चाहिए बेटा?
ये वाला ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बेसिकली. So n into your delta x is equals to your n into your lambda is equals to your d into cos theta. Maximum value of your cos theta will be equal to how much for me? 1. Maximum value of the cos theta. Cos theta is equals to your maximum value 1. यानी n lambda is equals to your d. यानी n max will be equal to your how much for me beta? D by lambda. D value is given how much beta? 1 meter plus 1 meter, that is 2 meter distance between these two, divided by wavelength. Wavelength of the light used is 0.5. So this will be equal to 0.5. That means that will be equal to 4. So n maxima are how much for me beta? 4. That means in the one quadrant, if I am taking the one quadrant, like now if I am starting from somewhere here right now. So it is 0. Here I am getting your lambda. Here I am getting your 2 lambda. Here I am getting your 3 lambda. And here I am getting as of your 4 lambda. Done. The same way here also, no beta. It is 0. Here it will be lambda. Here it will be 2 lambda. Here it will be 3 lambda. And here it will be your 4 lambda again. Isn't it? Same way right now here also. Isn't it? So like that, how many quadrants? 1, 2, 3, 4. 4 quadrants. Isn't it? So n value will be equal to how much for me? 4 into 4. That will be equal to 16. 16 will be the answer. डी साइन थीटा कब लेना और डी कॉस, मैंने बोला ना बेटा, अगर वाईडीएससी में अगर स्लिट्स ऐसा वर्टिकल होते हैं तो यहाँ पर का पाथ डिफरेंस जो आता है, ये जो पाथ डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू साइन थीटा लेते हैं. अगर ये स्क्रीन है और सोर्स जो है ना अपने पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, मान के चलो यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, तो ऐसे वाले सोर्स में विद इट इज स्लीपिंग ऑन द एक्सिस, तो इसका पाथ डिफरेंस यहाँ पर जो है ना ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू कॉस थीटा. वर्टिकल रहे जब साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल रहे जब सोर्सेस, दिस आर द सोर्सेस S1 एंड S2, दैट विल बी इक्वल टू योर कॉस थीटा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन बेटा 44. 44 देखिए बेटा, light waves are traveling in a vacuum along your y-axis. Light waves are been traveling along your y-axis. ऐसा लाइट जा रहा है उसको. वेव फ्रंट इसका कैसा होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू दिस वन ना बेटा, ऐसा परपेंडिकुलर. लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ योर वाइब्रेशन, ऐसा डालो, दिस विल बी योर वेव फ्रंट. isn't it? तो यहाँ पर y क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. सो ऑब्वियसली y विल बी योर कांस्टेंट. ठीक है, चलो 45. On placing a thin sheet of mica of a thickness 12 into 10 to the power of minus 5 centimeter in the path of one of the interfering beams in YDSC, the central fringe shifts equal to your fringe width. Then the refractive index of your mica will be equal to your how much? Direct formula beta. On placing a thin sheet of a mica of thickness this much, the central bright fringe shifts equal to your fringe width. Isn't it? So what will be the answer for this one? So y is equals to your mu minus 1 into your capital T into capital D divided by your small d. Shifts by your how much for me? Y maxima मतलब ये कितना हो जाएगा maxima के लिए? Lambda into capital D divided by small d is equals to your mu minus 1 into capital D into your t divided by small d. This one will get cancelled. This capital D will get cancelled. तो कुछ और cancel हो रहा है क्या? देखो बेटा वहाँ पर mu minus 1 into t will be equal to lambda is equals to mu minus 1 into your t. Refractive index पूछ रहा है, so we need to calculate the refractive index. यानी mu minus 1 will be equal to your lambda by your t. यानी mu value will be equal to lambda by t plus 1. So wavelength की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? 600 nanometer, यानी 600 into 10 to the power of minus 9 divided by thickness is given as 12. So it is 12 into 10 to the power of minus 5 centimeters है. सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, so 5 minus 2 यानी minus 7 हो जाएगा ये, isn't it? इसके साथ plus 1. तो ये वैल्यू कितनी आ रही देखिए बेटा, 6 1 6 2 ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा. 6 1 6 2 12 यानी 1/2. 1/2 मतलब 0.5 plus 1 यानी this will be equal to 1.5. So refractive index of the sheet will be equal to 1 point. ठीक है, very good.
चलो next one. When an unpolarized beam of light is traveling in an air is incident on a glass sheet, इसका refractive index 1.5 है at a polarizing angle, then reflected beam is 100% polarized. Reflected and refracted beams are partially polarized beam. Refracted ray is 100% unpolarized. All of your this. What will be the answer, beta? So देखो brevestes angle में reflected light is totally polarized, beta. So reflected beam is 100% polarized. 46 के लिए one option will be the answer. चलो 77. If a bichromatic light is used in YDSC with wavelength lambda 1 is 500, lambda 2 is 800, then minimum order maxima of lambda 1 which overlaps with the maxima of your lambda 2. यानी n1 lambda 1 must be equal to n2 lambda 2. ठीक है ना? Is asking the value of n1 by n2. So n1 by your n2 is equals to lambda 2 divided by lambda 1. That is 800 divided by 500. This will get cancelled. यानी n1 divided by n2 will be equal to 8 by 5. But minimum value of n1 is by n1 will be equal to n2. मतलब n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 के बराबर होना चाहिए. So that will be equal to your 8. ठीक है? Next one. In case of polarization, if I is the incident angle and theta p is the polarizing angle, incident angle is I and polarizing angle is represented by theta p, then polarization के लिए condition क्या होना चाहिए बेटा? Obviously angle of incidence must be equal to polarizing angle. Direct question है, isn't it? So I must be equal to theta p. Reflected ray is partially polarized. Refracted ray is partially polarized. Correct. I is equal to theta p. Reflected wave is fully polarized. That is also correct. Both 1 and B are correct. And fourth option will be the answer for this. ये नहीं लिखना है अपने को. So fourth option में 1 and 2 दे रखा है तो fourth option अपने को टिक करके आना है. फिर से एक बार देख लो बेटा. Angle of incidence must be equal to your polarizing angle. Refracted ray जो है ना partially polarized है और reflected ray of light is fully polarized है. ये बात याद रख लीजिए. 49. Two coherent sources of the light of wavelength. अब relative velocity का नहीं होता बेटा, मैं देखता हूँ. Two coherent sources of the light of wavelength 6.2 into 10 to the power of minus 6 meter produces the interference. The path difference corresponding to the 10th order maxima will be equal to your how much? Can anyone do this one? बेटा direct question है. Maxima के लिए पूछ रहा है ना बेटा. So maxima के लिए delta x का formula क्या है? Path difference d into your sin theta, isn't it? So that will be equal to how much for me? N lambda. The two coherent sources of your light of wavelength how much? N lambda is equals to d into your sin theta. Then path difference corresponding to the 10th will be equal to how much? यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 into wavelength की वैल्यू 6.2 into 10 to the power of minus 6. That will be equal to your delta x path difference. तो कितना बन रहा है देखो? 6.2 into 10 to the power of minus 5 meters. Fourth option. Done. Next one. The ratio of maximum and minimum intensities of an interference pattern is 36:1. And the ratio of amplitude of the two interference pattern will be equal to how much? देखो, I max का फॉर्मूला क्या है अपने पास? I max divided by your I minima is equals to amplitudes में लिख रहा हूँ तो A1 plus of your A2 का whole square divided by A1 minus of your A2 का whole square. ठीक है ना? प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? I max by your I minima के रेशियो कितना है? 36:1. यानी I can write this one as A1 plus A2 divided by A1 minus of A2 is equals to under root of 36 divided by 1, that will be equal to 6. यानी A1 plus of your A2 is equals to 6 times of your A1 minus of your A2. यानी that will be equal to 6 times of A1 minus 6 times of A2. This is your A1 plus of your A2. Isn't it? All the A1 terms एक जगह ले लीजिए, A2 terms और another जगह. तो अगर ये इधर आ गया तो this will become for me 5 times of your A1. 5 times of your A1 is equals to 7 times of your A2. Isn't it? So A1 by A2 कितना आ रहा है बेटा? A1 by A2 is equals to 7 by 5. Okay? So 7:5 will be the answer. मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा. एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए. फॉर्मूले रिवाइज करेंगे संजय बटे, अभी टाइम तो नहीं है बेसिकली, सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट वन ऑन योर ओन.
डन बेटा। चलो फॉर्मनेस एक बार रिवाइज कर लेके आप लोग कल के एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। टेक केयर बेटा, बाय।